Good morning, students. In the previous class, you learned some connecting medias, how they are connected with each other, and you also learned the dial-up connection, DSL, and there are different service providers are there. Because of that, you can connect to the internet. You also learn that you are the client and how the servers are directly connected with the internet, but you are, as a client, you are not directly connected with the internet. You are connected by the help of your internet service provider. जिस टाइप का सर्विस प्रोवाइडर वो रहे, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, जियो है. Okay, so today we will learn that what are the application layers protocol. So in the OSI as well as your TCP/IP, there are different types of protocols are there. There are various layers in your OSI model. You see the 7 layers, and in your TCP/IP you have the 5 layers. In oldest version it says that this is the 4 layers. Okay, so आपका जो application layer protocol है, that is हम लोग बोल सकते हैं that is the user layer. Means there are certain application you are using in your PC or in your system or on your mobile phone handheld device. Okay, so in every technology you are using these applications. Okay, so by the help of this application you can do any types of work. जैसे आपका ब्राउजर भी हुआ, that is one type of application. MS Word हुआ, that is also one type of application. So हम लोग यहाँ पे internet and web technology पढ़ रहे हैं. So that the browser में browser is the best application. By the help of you can by the help of it you can connect with the internet and access the www, that is your web. So वहाँ से आप क्या different information पा सकते हो. Okay, so today we learn that what are the application layers protocol. There are various application layer protocols are there. In our class we will see few of them, some of the important of these application layer protocols. So the first one is your Telnet. Telnet stands for the communication network, and it helps in terminal emulation. It allows the Telnet client to access the resources of the Telnet server. So यहाँ पे क्या होता है ना, as I have mentioned that Telnet is the client server application that allows a user to log onto your remote machine and lets the user to access any application program on a remote computer. Okay, so Telnet so it allows the Telnet client to access the resources of the Telnet server. यहाँ पे होता है that the Telnet uses network virtual terminal system use करता है. वो क्यों यूज करता है? To encode the characters on the local system. Encoding decoding पढ़े होगे, plain text, cipher text. Okay, so यहाँ पे वो encode करता है वो characters को आपका local system में, and on the server side क्या होता है ना, on the server या remote machine में this network virtual terminal क्या करता है ना, decodes the character to form a acceptable to the remote machine. Okay, वो decode character को decode करता है. So this is possible by the help of these transport protocols. तो transport protocols में आपका आता है TCP, UDP. Okay, so your transmission control protocol and user datagram protocol. TCP is your connection oriented. User datagram protocol is a connection less protocol. And liable के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, that is TCP. But
फास्टर केस की मैं बात करूं, दैट इज योर यूडीपी, उसमें फास्टेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होता है। सो कहीं कहीं पे हम लोग टीसीपी यूज करते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग यूडीपी यूज करते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग बोथ टीसीपी एंड यूडीपी यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ पे टीसीपी यूज आप देखोगे कि जहाँ पे यूडीपी यूज हुआ वहाँ पे टीसीपी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसका आप लोग का ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर आपका 16 बीट पोर्ट्स यूज करता है। ओके, 16 बीट्स अगर मैं बात करूं, दैट इज योर 2 to the power 16 होगा, मीन्स 65536 पोर्ट्स। सो यहाँ पे 0 to 1023 जो पोर्ट होता है दैट इज वेल डिफाइंड पोर्ट बोलते हैं। ओके, सो ये आपका टेलनेट यूज करता है पोर्ट नंबर दैट इज योर 23 नंबर पोर्ट वो यूज करता है। ओके, नेक्स्ट कम टू योर इको। इको में आपका क्या होता है ना, एक आपका नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट होने के लिए आप जैसे पिंग का यूज करते हो, दैट इज इन योर ICMP प्रोटोकॉल में। ओके, so ping means you connect your device with some other device inside the network। तो यहाँ पे क्या होता है ना, क्लाइंट होता है एंड सर्वर होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसका रेस्पॉन्स देगा। जैसे as I have mentioned earlier, that is types of messages, वो रिक्वेस्ट है या रिस्पॉन्स है। ओके, तो यहाँ पे एक राउंड ट्रिप होता है किसके बीच में, जो क्लाइंट जो मैसेज भेजता है एंड सर्वर जो रेस्पॉन्ड भेजता है उसके बीच में। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ना, एक राउंड ट्रिप हो रहा है। सो ये जो आपका राउंड ट्रिप हो रहा है मीन्स क्यों हो रहा है कि फॉर to know that whether you are connected with the network, इसीलिए हम लोग इको यूज करते हैं यहाँ पे। सो ये स्पेशली यूज होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसको यूज करता है। ओके, दैट टू नो दैट डिस्कनेक्टेड विद द नेटवर्क और नॉट। सो यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर आपका यूज होता है इको के लिए 7 एंड जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आपका यूज होता है दैट इज TCP। वैसे आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड और एक होता है दैट इज ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट स्पेशली यूज्ड फॉर ट्रांसफर द फाइल। Okay, and these are used for transferring small and larger files across a network. The only difference between the two protocols is that FTP allows authentication and FTP does not. Authentication मतलब क्या, जैसे आप Gmail में लॉगिन करते हो सपोज, तो आपको ऑथेंटिकेशन मांगता है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है, you have proper user ID and password with you. If you do not have user ID and password with you, then you cannot log in to the Gmail because you are not an authorized person. Okay, and authentication और क्या होता है ना, ऐसा तो नहीं कि Gmail का आप हर सोर्स आप यूज कर सकते हो। ओके, सो उसमें जो आपको एक्सेसिबल रहेगा बस उतना आप यूज करते हो एज ए ऑथराइज्ड पर्सन। जितना चीज को आपको, जैसे आप फेसबुक भी अगर आप यूज करते हो तो जितने के लिए आप को ऑथराइजेशन दिया गया है बस उतना आप यूज कर सकते हो। ओके, सो FTP allows authentication but आपका trivial file transfer doesn't allow your क्या ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है। एंड यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर यूज होता है 2021 पोर्ट नंबर यूज होता है। एंड यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आपका यूज होता है TCP। वैसे आपका सिंपल आपका मेल ट्रांसफर के लिए हम लोग यूज करते हैं SMTP। ओके, so it stands for Simple Mail Transfer Protocol and it is a part of the TCP/IP protocol using a process called your store and forward. And SMTP moves your email on and across networks with the help of this port number that is your
25 and uses the transport protocol, that is your transmission control protocol. Okay, so यहाँ पे आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? जो भी आप मेल ट्रांसफर करते हो, जैसे आप सिंपल मेल आप जीमेल में भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप क्या करते हो? You can store it and you can forward that email to any other system in the network. Any other system आप अगर ID मारोगे तो आप उसको सेंड कर सकते हो. So यहाँ पे एक्चुअली तुम लोग का डिफरेंट टर्म्स यूज होता है नेटवर्किंग में. स्टोर फॉरवर्ड, आप कैसे सिंक्रोनाइजेशन होता है, कैसे रिक्वेस्ट आता है, कैसे रिस्पॉन्स आता है, आपका जो भी आप मैसेज ट्रांसफ़र किए हो आप उसको स्टोर करते हो, कैसे उसको सेंड करते हो, या किसको कैसे वही सेम मैसेज को डिफरेंट आईडीज में आप फॉरवर्ड करते हो थ्रू द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क. ओके, सो दिस इज डन बाय योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. सो एक चीज है जो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में होता है ना. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिफर्स फ्रॉम द अदर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस बिकॉज इट एस्टैब्लिशेस टू कनेक्शंस बिटवीन द होस्ट. ओके, सो पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए. मतलब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जो आपका डिफरेंट होस्ट्स है, आप एक होस्ट हो, होस्ट 1, आप दूसरा होस्ट को मैसेज भेज रहे हो. सो आपके बीच में कनेक्शन होना जरूरी है. इफ यू डू नॉट फॉर्म एनी कनेक्शन बिटवीन ईच अदर, देन आप कोई भी मैसेज आप या कोई भी फाइल ट्रांसफर नहीं कर पाओगे. इसीलिए इट मेंशन दैट the FTP differs from other client server application because it establishes two connections between the hosts. And another thing is that two connections are data connection and control connection होना चाहिए. जो डाटा जो आप ट्रांसफर कर रहे हो दैट उसके बीच में भी एक कनेक्शन होना चाहिए एंड कंट्रोल फ्लो. ओके, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आप रिसीव नहीं किया, आप भेजते जा रहे हो, ऐसे नहीं. ओके, सो प्रॉपर कंट्रोल कनेक्शंस भी होना चाहिए. सो डाटा कनेक्शन, यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर देखिए फाइल ट्रांसफर में लिखा हुआ है 20 एंड 21. सो आपका जो डाटा कनेक्शन के लिए आपका जो यूज होता है पोर्ट दैट इज 20 एंड आपका जो कंट्रोल पर्पस में जो यूज होता है पोर्ट दैट इज योर 21. Okay, so one connection is used for data transfer के लिए यूज होता है, the other for your control information के लिए आपका यूज होता है. Okay, same as your DNS. DNS you have already studied that domain names system. आप डोमेन नेम स्पेस, डोमेन नेम सिस्टम आप पढ़े हो. मीन्स आप यहाँ पे क्या करते हो, रेदर देन यूजिंग the IP address in your web address, आप IP एड्रेस ना पुट करके क्या यूज करते हो, डोमेन नेम यूज करते हो. जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है www.abc.com. ओके, दैट इज यूज्ड फॉर मींस .com फॉर योर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है. वैसे इंडिया के लिए आपका डोमेन नेम यूज .in, ऑस्ट्रेलिया के लिए .au. ओके, वैसे सम नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट डोमेन नेम आपका यूज होता है. तो ये जो डोमेन नेम होता है वो रिजॉल्वर के हेल्प से वो मैप होता है आपके आईपी एड्रेस के साथ. यू लर्न द हायरार्की. ओके, यू लर्न द हायरार्की, जैसे .org होता है, .in होता है. देन उसके नीचे लेवल में आपका जो आईपी एड्रेस रहता है वो कैसे मैप होता है. ओके, सो मैं अगर google.com मारती हूँ तो उसके लिए भी एक आईपी एड्रेस होगा. दैट मीन्स इट मीन्स टू दैट आईपी एड्रेस वो मैप होगा. देन ओनली यू सर्च एनी ऑफ द थिंग्स वट एवर यू वॉन्ट. ओके, so it stands for domain name system, and every time you use a domain name, therefore a DNS service must translate the name into the corresponding IP address.
सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है www.abc.com might translate to 198.105.232.4. That is for example purpose. Okay. So डोमेन नेम इसी हिसाब से आपका काम करता है. आपका कंट्री डोमेन होता है जो आप मैं बोली जैसे इंडिया के लिए .in यूज होता है. ओके. सो वेरियस डोमेन नेम्स आर देयर. यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर आपका डोमेन नेम के लिए आपका यूज हो रहा है, दैट इज योर 53. एंड कौन सा ट्रांसपोर्टिंग प्रोटोकॉल आपका यूज होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आपका यूज हो रहा है, दैट इज योर TCP IP यूज होता है. So to identify an entity, the TCP IP protocol uses the IP addresses which uniquely identifies the connection of a host to the internet. So IP address उसी लिए यूज होता है, uniquely identify a system के लिए यूज होता है. Okay. And DNS is a hierarchical system which based on a distributed database and that uses a hierarchy of name servers to resolve internet host names into the corresponding IP address, which is required for the packet routing by issuing a DNS query to a name server. Okay. आप जानते हो नेटवर्क कॉन्सेप्ट में आप जब इंटरनेट लेयर में आप वर्क कर रहे हो, नेटवर्क लेयर में आप वर्क कर रहे हो, यू सेंड योर आपका जो मैसेज सेंड हो रहा है दैट इज पैकेट डिलीवरी होता है वहाँ पे. ओके. सो हाउएवर पीपल रिफर्स टू यूज नेम्स इंस्टेड ऑफ द एड्रेस. आप नेम यूज करते हो इंस्टेड ऑफ एड्रेस. जैसे आप अगर कहीं से आ रहे हो एंड आप ट्रेन या फ्लाइट से उतरे, आप किसी को IP एड्रेस that uniquely identifies, तो मुझे इस एड्रेस में जाना है बोल सकते हो उसको. ड्राइवर को बोलोगे क्या आप उसको नाम बोलोगे? नहीं बोलोगे. लेकिन अगर मैं आप किसी फ्रेंड को आप किसी फ्रेंड को अगर मोबाइल नंबर मांग रहे हो तो उसका नंबर मांगोगे एंड यू सेव इट एज अ नेम. नंबर लिखोगे, आप नेम में सेव करोगे. सो दैट विल बी इजियर फॉर यू, ना कि उसका सिस्टम का आपका IP एड्रेस के थ्रू. नहीं मुझे 192.105.232.4 में कॉल करना. So it will be difficult for you to means there are crores of IP addresses are there and it is not possible to remember all the IP addresses. Okay. वैसे आपका यूज होता है DHCP. सो DHCP आपका एक टर्म होता है दैट इज स्टैटिक IP, जो आपका नॉर्मली आपका कॉलेज या बिल्डिंग के अंदर आपका सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है. दैट इज योर स्टैटिक IP which is provided inside within your institution. Okay. So that is the static IP and आपका सिस्टम में भी आप जो भी कनेक्शन दिया रहेगा उसमें आप देखोगे तो दैट इज योर स्टैटिक IP. सो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है ना, आपका DHCP स्टैंड्स फॉर योर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. सो इट गिव्स IP एड्रेसेस टू द होस्ट एंड इट यूजेस 2 पोर्ट्स दैट इज योर क्या होता है ना, द 67 एंड 68. सो इसी पोर्ट के द्वारा वो क्या करता है ना, there is a lot of information a DHCP server can provide to a host when the host is registering for an IP addresses with the DHCP server with the help of the port number that is 6768. वो क्या करेगा ना, the host है वो सिस्टम रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी IP एड्रेस स्टैटिकली नहीं करके वो क्या करेगा, अगर मुझे डायनामिक IP एड्रेस चाहिए तो मैं क्या करूंगी ना, रिक्वेस्ट भेजूंगी. ओके. विद द हेल्प ऑफ द पोर्ट नंबर. ओके. सो वो पोर्ट नंबर के द्वारा अगर मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मुझे क्या चाहिए ना, IP एड्रेस चाहिए. So this port number helps to recognize that a person एक host को dynamic this is for your dynamic host configuration protocol. Okay. So
उस एरिया में जो भी आपका जो प्रोवाइडर्स होंगे इंटरनेट होस्ट मैंने कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने हैं, तो जो पहले आपको दिस आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, यू एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगा, यू क्या करोगे, तो उसी को आपका सिस्टम, वो आपका सिस्टम के लिए आईपी एड्रेस है। ओके, सो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आपका यूज होता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल आपका यूज होता है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर दैट इट्स नॉट कि आप सिर्फ यूडीपी यूज कर सकते हो। देयर आर सम केसेस व्हेन यू आर यूजिंग यूडीपी भी यूज कर सकते हो, एंड आपका टीसीपी भी यहाँ पे यूज हो सकता है। ओके, so this is your dynamic host configuration protocol. Then आपका आता है HTTP. So this is the familiar term for you because whenever you are putting some web address in your address bar in the web page, then it's already आपको लिखने का जरूरत नहीं होता है, it already shows HTTP. So now it's आपका कनेक्शन जो होता है सिक्योर्ड कनेक्शन होता है। सो सिक्योर्ड सॉकेट लेयर यूज करता है। जैसे आपका एक कनेक्शन होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर में आपका मतलब वहाँ पे एनक्रिप्शन टेक्निक, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक यूज होता है। मीन्स द मैसेज जो आप भेज रहे हो या फिर जो भी कनेक्शन आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, दैट शुड बी सिक्योर्ड होना चाहिए, कि आप जो ऐसे जो टू सिस्टम के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी मैसेज डिलीवरी होगा, सो दैट विल बी सिक्योर। मीन्स आप यहाँ एनकोड करोगे या फिर कोई नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट रहेगा, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट, साइफर टेक्स्ट में प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट। ओके, सो यहाँ पे आपका क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज हो रहा है। मीन्स आप क्या कर रहे हो, एनकोड कर रहे हो, so that only the recipient can understand that message. That is यहाँ पे आपका HTTP में आपका secured connection. So by default अगर आप आज का डे में अगर कुछ भी वेब एड्रेस मारते हो, वहाँ पे आपको दिखाएगा HTTPS पहले लिखा होगा, then कॉलन, देन स्लैश, डबल स्लैश लिखा हुआ रहेगा, देन आपका जो वेब एड्रेस रहेगा वो लिखा हुआ रहता है। मतलब आप जो google.com अगर मार रहे हो तो google.com लिखोगे। सो बाय डिफॉल्ट योर HTTPS दिखाई देगा। once that is for secure, your connection is secured. पोर्ट नंबर फॉर HTTP यूज करता है 80, पोर्ट नंबर फॉर HTTPS यूज करता है 443, and the transport protocol यहाँ पे यूज होता है that is your transmission control protocol. Then आपका आता है आपका POP3. Next come to POP3. So POP3 is a client server protocol in which email is received and held for you by your internet server, and periodically you or your client emails receiver check your mailbox on the server and download any mail, probably using this POP3. It's used for simple mail transfer के लिए आपका use होता है। You simply check the mail on your mailbox. Okay, so यहाँ पे आपका this POP3 is the latest version. आपका इससे पहले भी यूज होता था, that is your POP2. That POP2 is your oldest version. वहाँ पे आपका जो पोर्ट नंबर यूज होता था, that is your 109, and this 10110 is used for this POP3. Okay, so यहाँ पे आपका कनेक्शन कैसे यूज हो रहा है, that is your ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, so this is all about your application layer protocols. There are other application layer protocols आपका है, that is secured cell protocol, that is your SSH है, आपका NTP हो सकता है, आपका RIP है। Okay, so there are numerous application layer protocols. So these are the importance. That are also important application layer protocols. Okay,
So this is all about your application layer protocols. Now come to your web browser. So web browser आपका क्या होता है? Web browser commonly referred to as a browser, which is a software application for accessing information on the World Wide Web by the help of your internet connection. Okay, so web browser, there are various types of browser आप भी डे टू डे लाइफ में आपका यूज करते हो, जैसे आपका डिफरेंट ब्राउजर आपका क्या क्या है? क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, आपका एक होता है आपका मोज़ेक. तो these are some of the web browsers are there. most popular आप जो क्रोम यूज करते हो, that is most of the users use this, and obvious Mozilla Firefox. Okay, so ये आप बोल सकते हो द वेब ब्राउजर आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, by the help of which you can access the information on the World Wide Web. So यहाँ पे क्या होता है ना, when a user requests a web page from a particular website, the web browser retrieves the necessary content from a web server and then displays the page on the user's device. So the first web browser was called your World Wide Web, which was created in 1990 by Sir Tim Berners-Lee. Then he recruited Nicola Pillow to write the line mode browser, which displays web pages on dumb terminals, and which was released in 1991. So आप confuse मत होना वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन के बीच में, because a web browser is not same thing as a search engine, though the two are often confused by people. So for a user, a search engine is just a website which provides links to other websites, and however, to connect to a website server and display its web pages, a user must have a browser installed there. Okay, so यहाँ पे आप वेब ब्राउजर कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, वेदर इट इज पीसी, आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट्स हो सकता है, आपका स्मार्टफोन यूज हो सकता है. सो कहीं पे आप इस वेब ब्राउजर को आप यूज कर सकते हो. सो according to the survey in 2019, as estimated that there are 4.3 billion people use this browser, and most of them use कौन सा यूज करते हैं? as I have mentioned, that is your Google Chrome. Okay, so then आपका और भी है, that followed by your Safari आपका यूज होता है, और आपका अदर नोटेबल ब्राउजर्स है, आपका Firefox है, आपका Microsoft Edge है. Okay, so as I have mentioned that Sir Tim Berners-Lee was created this, and आपका जो फर्स्ट जो वेब ब्राउजर ये हुआ था 1993 में हुआ था, which was landmark year with the release of this Mozilla, which is created as the world's first popular browser with the. एंड जब आप वेब ब्राउजर को देखते हो, आप एक वेब पेज को देखते हो, वहां पे क्या किया जाता है? ग्राफिकल, दिस इज द ग्राफिकल इंटरफेस. You can see the text, you can see the pictures, you can see the videos, and we can see different categories of these graphics. Okay, so यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ना, this is in turn spranked the internet boom of 1990s, when the web grew at a very rapid rate. So 1990s के बाद आपका जो वेब यूज होता है, that is very rapidly वो ग्रो करते गया. आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आपका 1995 में आया था. ओके, एंड आपका 1998 में उसके बाद आपका नेटस्केप नेविगेटर आपका यूज होता है, एंड आपका एप्पल रिलीज किया सफारी, which is in 2003 में हुआ. Then Google debuted its Chrome browser in 2008 में हुआ.
आपका माइक्रोसॉफ्ट भी ऑल्सो रिलीज इट्स एज ब्राउजर एक है, सो वो आपका 2015 में हुआ। सो आप जो भी terms of technologies browser have greatly expanded there by the help of some graphical user interface तो वहाँ पे रहता है। So ये जो graphical user interface आप देखते हो which was designed by using some programming languages, subscripting languages, जैसे आपका nowadays that most high level programming languages used there, that is your Java, Python, etc. and some scripting language use होता है जैसे HTML, cascading स्टाइल सीट यूज होता है, सॉरी कैस्केडिंग स्टाइल सीट यूज होता है। देन आपका जावास्क्रिप्ट एंड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज सिंस 1998 से आपका वो यूज होते आ रहा है। सो आपका अगर कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन है देन यू कैन एक्सेस दिस वेब ब्राउजर्स। ओके, so यहाँ पे there are various browsers are there, your Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and your Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera Mini, आपका Maxthon आपका होता है। तो these are आपका different वेब ब्राउजर्स आपके हैं। ओके, सो जैसे मैं बोली कि आप वेब ब्राउजर एंड आपका सर्च इंजिन में मैच मैप करना। तो वेब सर्च इंजिन और इंटरनेट सर्च इंजिन अगर मैं बोलूँ वो भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है which is designed to carry out the web search और इंटरनेट सर्च। मीन्स जो भी आप सर्च कर रहे हो मीन्स www में और वर्ल्ड वाइड वेब में इन अ सिस्टमेटिक वे फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए specified in a textual web search query। आप नॉर्मली आप जो भी देखना चाहते हो you normally text it on the web search, मतलब सर्च इंजिन में आप सर्च करते हो। and nowadays it's facilitated you to मीन्स ऑडियो के द्वारा भी आप सर्च कर सकते हो। okay, so there are various search engines are there। okay, so there are various search engines जैसे आपका याहू है, आपका गूगल है, आपका और क्या सर्च मी है हो सकता है, आपका और क्या सोसो हो सकता है, बिंग है आपका और different web search engines है। okay, you will see by the help of your net that there are various types of search engines are there and in what era or in which year it was released। okay, नॉर्मली हम लोग जो सर्च इंजिन यूज करते हैं दैट इज योर गूगल सर्च इंजिन आप यूज करते हो, दैट इज एक्टिव सर्च इंजिन है। कुछ सर्च इंजिन है दे आर मतलब आप नाम देख सकते हो बट दैट आर नॉट एक्टिव। आपका और है ask.com है दैट इज एक्टिव एंड जैसे मैं सोसो एक बोली दैट इज इनएक्टिव विच इज मर्ज्ड विथ आपका मर्ज हो गया है सोगो, उसके साथ आप वो मर्ज हो गया है। जैसे आपका search.com है दैट इज ऑल्सो वन सर्च इंजिन है। ओके, so these are the search engine। by the help of this search engine you can search whatever thing you want to search। now come to hypertext and hypermedia। so it is the मैं यहाँ पे comparison versus hypertext versus hypermedia दिखाई हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे difference between hyperlink and hypertext। so जब आप वेव के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हो you have to know these terms that hypertext, hypermedia, hyperlink। so hyperlink आप जानते हो जब आप एक वेब पेज से दूसरा वेब पेज में आप जाते हो तो आप by the help of this hyperlink you go from one page to another page easily। so जब one page से another page जाते हो then वहां से again another page जा सकते हो। so you can go one page to another page, one page to another page by the help of these hyperlinks। okay, so यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो what is अगर hypertext and hyperlinks का बात अगर बोलूँ
तो both the terms are twins to each other and performs with each other, basically complete each other. So but few times we get confused about which one is which one real, मतलब कौन सा hyperlink है और कौन सा hypertext है. So यहाँ पे टू क्लियर द कंफ्यूजन आप लोग बताएंगे कि that what exactly the hyperlink is and how what exactly the hypertext is. Okay, so hyperlink आपका hypertext पहले बोलती हूँ. आपका जो टेड नेल्सन है, he introduced the hypertext term in 1956 में वो इंट्रोड्यूस किए थे. So basically this hypertext is a text which contains the visible text to the redirect the targeted page. जब URL में आप कुछ लिखते हो, so that is your hypertext होता है. वो क्या के लिए इन्वेंट हुआ था कि it was invented to establish cross reference in the computer world and similar to that is made in books like an index. जैसे आपका बुक में इंडेक्स रहता है, तो by the help of this index you go to accurate page. Okay, वो जो इंडेक्स में जो भी वर्ड रहेगा वो कौन सा पेज में है वो एक्यूरेटली वहाँ पे मेंशन लिखा हुआ रहता है. सो इंडेक्स में अल्फाबेटिकल वाइज वो लिखा हुआ रहता है. that will make you easier to search anything. वैसे ही आपका यहाँ पे काम हो रहा है. So, however, the usual pattern of the reading a book is sequential, but this hypertext introduces the idea of your cross-referring the data. And this cross-referring जो terms हम लोग use करते हैं is a sort of complicated within the word, but it makes the work easier. So, if we are surfing something on the web at the time of reading a piece of writing, we suddenly encounter a term which we wanted to understand at that moment. If that term may be a hypertext, we will directly attain that page where we will find the information about the term. So this eliminates the additional time of searching the terms. Flower चाहिए तो मैं normally flower मार दूंगी. Tree का दिखाना है, tree मार लूँ. टेक्नोलॉजी के बारे में देखना है, टेक्नोलॉजी इंटरनेट क्या है उसके बारे में देखना है, उसको मार दूंगी. Okay. So this is the combination, this hypertext is the combination of both the hyperlink as well as your आपका क्या हो सकता है hypertext. Okay. So आप जब HTML पढ़ोगे तो आप HTML में आपका that is stands for hypertext markup language. तो वहाँ पे कैसे हेडर रहता है, आप हेड में कैसे लिखोगे, टाइटल में कैसे लिखोगे. So वो आपका डिजाइन होके है. That is why you see the web page in that manner. Okay, that markup language में आपका जो भी लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपका वेब पेज का स्क्रीन दिखाई देगा. ओके, एंड आपका जो यहाँ पे जो hypertext and hypermedia के बारे में बोल रही हूँ, तो hypertext refers to the text which links to other chunks of the text within same or different documents हो सकता है. Hyperlink क्या है ना, it is an extension of hypertext which is not constrained to be text based. ओके, कोई पिक्चर में भी आप क्लिक करते हो वो पिक्चर ले जाता है, कोई लिंक में आप क्लिक करते हो वो लिंक में ले जाता है. ओके, क्लिक ऑन द पिक्चर, क्लिक ऑन द एरो मार्क, वो टेक्स्ट नहीं रह रहा है. ओके, सो इट इज एन यहाँ पे देख रहे हो, इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिंक टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग क्रॉस रेफरेंसिंग टूल्स कॉल्ड योर हाइपरलिंक्स. So hyperlinks के द्वारा they are connected with one page to another. We are connected with one page to another page. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? It refers to a non-linear presentation of content that include plain text, images, audio, videos, and still or moving graphics. हम भी use कर सकते हैं. To link, मैं जैसे बोली कि वहाँ से टेक्स्ट को क्लिक करने से नहीं होगा, सब एरो मार्क रहेगा या कोई सिंबल रहेगा, उसको भी आप क्लिक करोगे तो यू कैन गो टू वन पेज टू अनदर पेज. सो हम लोग डिफरेंट ग्राफिक्स भी यहाँ पे यूज होता है हाइपरलिंक हाइपर मीडिया में. ओके, हाइपर मीडिया में वही सब यूज होता है.
So media means क्या बोलते हो, whether it is text, any graphics, video हो सकता है, audio हो सकता है, images हो सकता है, that is a graphics, that all together हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, मीडिया बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इट सिंपली अलाउस यूजर टू जंप फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन गो टू लिंक्स. हाइपर टेक्स्ट में बाय द हेल्प ऑफ दिस हाइपर लिंक की हेल्प से हम लोग जा सकते हैं. हाइपरमीडिया में क्या बोल रहा है, इट एक्सटेंड्स द एबिलिटी ऑफ हाइपरटेक्स्ट टू इंक्लूड लिंक्स विद इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट. Hypertext technology is based on effective human-computer interaction and relevant cross-referencing of related items. And यहाँ पे क्या बोल रहा है, hypermedia technology extends the use of multimedia elements to create clickable links that reader can both access and internet with. Okay, and here one other, it represents multimedia content in electronic टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है. एंड जो हाइपर मीडिया है वहाँ पे इट कंबाइंस बोथ द हाइपर टेक्स्ट एज वेल एज योर मल्टीमीडिया टू रिप्रेजेंट अ वेल्थ ऑफ द इंफॉर्मेशन. So what are the difference between hyperlink and hypertext? Hypertext contains the non-linear linking of the text with some other information. It basically uses the text. And hyperlink क्या होता है ना, in hyperlink the reference are used in the hypertext हो सकता है और they are hypermedia हो सकता है. So hypertext involves only text हो सकता है, hyperlinks involve the text, media, audio, video, images, graphics. Hypertext direct information only generates the related information. Hyperlink direct link could contain some unrelated information को भी वो जा सकता है. जैसे आप वेब पेज में आप एक लिंक को मारते हो, कभी कभी देखना मतलब आप फ्लावर मार रहे हो, कुछ भी सिंबल पे क्लिक कर रहे हो, इट आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, स्टिल यू गो टू सम पेजेस विच आर इररिलेवेंट टू यू, मतलब आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बट यू कैन सी दैट पेज ऑल्सो. Okay, the unrelated information also you can see it. Okay, so hypertext contains hyperlinks. Hyperlinks contains the comprised of the URLs, uniform resource locators. Hypertext associated with the keywords, hyperlink associated with the anchor tags. The anchor tags आप different tags आप यूज करके एंकर कर सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जब हम लोग HTML पढ़ेंगे तो तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं टैग्स. जैसे प्रोग्रामिंग में हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स आप यूज करते हो, वैसे हम HTML में जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हम लोग नॉर्मली सम टैग्स यूज करते हैं. ओके, so this is all about your application layer protocols, hypertext, hypermedia and hyperlinks, your web browsers. Okay, for today this much.